Hello guys, welcome to my channel. So in the previous topic we have discussed about grouping selector. Now this topic will see how we can use the universal selector. In the previous video I have told you, suppose I have n elements, and for n elements if I have to give the same effect, then what is the solution? अगर सोचिए अब मेरे पास 10 एलिमेंट्स है या फिर 10 टैग्स है, उस 10 टैग्स को मुझे सेम इफेक्ट देना है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं एक कंसेप्ट है सीएसएस में, यूनिवर्सल सिलेक्टर. आई कैन यूज दैट यूनिवर्सल सिलेक्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. I let me include the HTML tag. Okay, so within that I have the head, title, universal selector, close the title. Let me first save it. Universal, let's just selector. Fine. Now within this I'll include the style tag. Okay, the style tag, and then I'll close the head. Fine. So I have the body tag. Let me close the body tag. Okay. So now you can see the same structure. I have the HTML tag. HTML tag है, HTML tag के अंदर एक head tag है, head tag के अंदर title है, फिर style tag है, head tag close हो गया, body है, and HTML tag मैंने close कर दिया. अब मैं यहाँ पे बहुत सारे tags यूज कर रहा हूँ, जैसे p tag. This is the paragraph tag. Okay, now I'm closing it. Then I'm using suppose h1. This is the heading tag. I'll close the h1. Then let me include the b tag. This is bold tag. Whatever, just to show you the universal selector. Then I tag. Hi everyone. Okay. So let me include one more heading tag h4, my blog. Okay. So I have a p tag, I have h1 tag, I have b tag, I have I tag, and h4 tag. Okay. So now if it's a normal HTML code. Now and I have shown you all these things in my HTML tutorial. ये आप लोग देख चुके हो HTML ट्यूटोरियल में. अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि नॉर्मल जो HTML का जो कोड एग्जीक्यूट होता है, वैसे नॉर्मल HTML कोड एग्जीक्यूट होगा. ये पैराग्राफ है, ये h1 है, ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, और ये h4 टैग है. ओके. अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आई यूज स्टार, एंड देन आई वांट एवरीवन कलर शुड बी ग्रीन. सबका मैं ग्रीन कलर चाहता हूँ. ओके. And let me include this font size. Font size suppose 25 pixels. Okay, so I'll save it. I'll go to the browser and then F5. तो आप लोग देख सकते हो अभी जो यहाँ पे कलर ग्रीन है, तो सब में ग्रीन हो गया because I have used the universal selector. Here I have used the universal selector. Universal selector. Okay. This is the concept of universal selector. For all the tags, it will have that effect. So even the if I give some effect for the body also, it will have the effect for the body tag. Fine. So for all the tags, for all the elements, the color will be green and the font size will be 25 pixels. I can give suppose font
family, I can do Times New Roman, save it, go to the browser, and then F5. So it will have all those colors. It's already in Times New Roman. By default, it's Times New Roman. So it will have those colors. So that effect. And then I can include text align. This is the basics properties that I have shown for a number of times, I guess. So I guess it's clear for you all. Text align center. Again for BA, you can see here. So if I use this text align center, आप लोग देख सकते हो कि मैंने अभी कलर ग्रीन दिया है तो सब में कलर ग्रीन हो गया और मैं उसके साथ अभी मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया हूँ तो सब में टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो रहा है और यहाँ पे मैंने एक यूज किया फॉन्ट साइज तो फॉन्ट साइज 25 पिक्सल हो रहा है तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं अगर स्टार सिंबल यूज करता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर में आप लोग देखे हो क्लास सिलेक्टर में डॉट सिंबल यूज करते हुए आईडी सिलेक्टर में हैश यूज करते हुए तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या है अगर मैं स्टार यूज करूंगा तो वो सब में इफेक्ट होगा तो सेम चीज अब मैं एक्सटर्नल सीएसएस में यूज करके दिखाता हूँ लिंक आरईएल ओके अब यहाँ पे मैं स्टाइल शीट यूज कर रहा हूँ ओके नाउ href is equal to universal.css fine and then I have to create a CSS file so what I can give the color so let me take from here anyone suppose I want this text align center should be included in the external CSS okay so what I'll do I'll use the same star and here I'll include अब मैं यहाँ पे text align center दे रहा हूँ अब मैं इसका नाम सेम रख देता हूँ तो फिर इजीली जो मैंने वहाँ पे लिखा था सेम नेम होगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि जो मैंने एक्सटर्नल सीएसएस में लिखा था यूनिवर्सल डॉट सी एस एस मैं वही फाइल से वही नेम से सेव किया यूनिवर्सल डॉट सी एस एस आई हैव सेव द फाइल विद द सेम नेम दैट आई हैव इंक्लूडेड इन दिस लाइन नंबर 5 that is href so this is for the external css code link rel style sheet and then href universal.css so in universal.css I am using star and then text align center so what will happen it will have the external effect in using internal css I have shown you the universal selector now by using external css I can use the effect of universal selector so now if I run this code you can see here in internal css I have color green okay and then I have font size 25 in using internal css now in external css I have used star and then text align center so now if I change this one if I cut from here and suppose using internal css I want only font size 25 and here if I use any other color suppose red okay I'll save it and go to the browser and refresh you can see from the external using external css I am giving the effect to all the elements to all the tags that it should be text align center and the color should be red and in internal css or in internal css I am using font size so यहाँ पे मैंने क्या किया font size जो 25 पिक्सल है वो मैंने सिर्फ internal css यूज करके किया है for universal selector and एक्सटर्नल में मैंने किया क्या एक्सटर्नल में मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर ही यूज कर रहा हूँ बट मैंने वहां पे सिर्फ टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया और कलर रेड दिया so like this I can mix all the concepts and integrate my integrate the concepts so it's based upon your needs it's based upon the client needs for whom you are developing I guess I have told you that external is far better only you have to go to that css file and modify external css ही professionally use होता है अगर कोई भी चेंजेस करना है तो पर्टिकुलर सपोज मेरे पास n नंबर ऑफ सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस फाइल है तो मैं पर्टिकुलरली उस सीएसएस फाइल में जाऊंगा मैं फिर सिर्फ वहां पे मॉडिफाई करूंगा तो आई गेस आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स फॉर द यूनिवर्सल सिलेक्टर repeatedly I am telling for all the videos for again and again I am telling if you have any doubt don't forget to comment in this video I used to share my blog I used to share my code in this blog this is my blog so you can go to this blog you can see the code if you have any doubts you can comment on this blog
and please subscribe my channel. Stay tuned. Take care. I am always there for you, help you out. You can go to the about section and see all the links. You can comment me wherever you want in the social medias like Facebook, Instagram. Then I have this blog. Then you can comment me in the videos of the YouTube. Fine. Thank you. Take care. Bye.